पाठ क्रमांक 2 फुटबॉल का खेल। फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। लाजू, मोहन, अब्दुल और निकिता को भी फुटबॉल खेलना पसंद है। मेरे और भी दोस्त हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन भी खेलते हैं। बैडमिंटन खेलने में हमें कम मज़ा आता है क्योंकि उसमें हम सभी दोस्त एक साथ नहीं खेल पाते। क्रिकेट में भी सारे दोस्त एक साथ नहीं खेलते। कभी निकिता जल्दी आउट हो जाती तो कभी मैं। कभी कोई हमें तो फुटबॉल खेलने में ही मज़ा आता है। न विकेट की ज़रूरत, न छोटी बॉल की, न चिड़िया शटलकॉक की और न ही दो बल्लों की, न भीगने का डर, न बॉल खोने का डर। बस एक फुटबॉल लाओ और खेलना शुरू। हम भी अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे घर हैं और उनके बीच में हमारा छोटा सा मैदान है। उस मैदान को देखते ही हमें लगता है कि वह हमें खेलने के लिए बुला रहा है। फुटबॉल खेलने के कारण ही इन घरों के सारे बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई। पाठ क्रमांक 2 9 झोपाळा खेळला उडून। एका तळ्यात 2 बेडूक होते। एकदा त्यांना पाण्यात 2 खांब दिसले. त्यांनी एक वेल आणून खांबांना बांधली. वेलीच्या खांदार झोपाळा तयार झाला. दोघेही बेडूक त्यावर बसून झोके खेळू लागले. तोच काय गंमत झाली. अचानक तो झोपाळा उडू लागला. ते 2 खांब नसून एका बगळ्याचे पाय आहेत हे लक्षात आल्यावर बेडकांनी पटकन पाण्यात उडी मारली. A kind trader lives in a desert. The trader buys and sells many things. He has a camel which carries his things. One night it is cold in the desert. The trader is sitting in his tent. It feels warm here. Master, may I put my head inside your tent? It is cold outside. Yes, certainly. After some time, oh master, I am freezing out
tired. Please let me put my shoulders in. Well, you may. I will make room for you. After some more time. Master, master, I am feeling very cold. Well, you may. I make room for you. After some more time. Master, master, I am feeling very cold. Please let me help my body in. You who will. Please, master, please. After an hour, master, let me come inside the tent. I cannot bear the cold. Oh, well, you can. But where will I go? The camel pushed his master outside.